फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो ह्यूमन राइट्स के बारे में पहले मैं कुछ डिटेल्स आप सबको बता देना चाहता हूँ। तो हम सबको पता है ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है। ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है मानव अधिकार। और ये क्या होता है, यह है फ्रीडम ऑफ ऑल ह्यूमंस, मतलब सबके लिए समान अधिकार। ठीक है, तो सबको समान अधिकार किस तरह से दिया जाए, इसके लिए जो अधिकार है, राइट्स है, क्या क्या अधिकार दिया गया है, उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो ह्यूमन राइट्स आप सभी जानते हैं कि महाभारत का युग हो या सत्ययुग हो, द्वापर युग हो या किसी भी युग में हर बार जब ह्यूमन राइट्स वायोलेशन होता है तभी ह्यूमन राइट्स के बारे में डिस्कशन शुरू हो जाता है। तो महाभारत में जो कुछ हुआ था वो अधिकार को लेकर ही हुआ था, ठीक है ना। और हमारे समाज में आज भी जो कुछ होता है वो सब अधिकार को लेकर ही होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स। ये बेसिक राइट्स है एंड फ्रीडम ऑफ ऑल ह्यूमंस। इट इंक्लूड द राइट टू लाइफ, लिबर्टी, freedom of thought, expression, equality before the law. It is unified, independent, and indivisible. The idea of human rights developed out of the natural rights theories of the early modern period. Such theories arose primarily out of desire to establish some limits on how individuals may be treated by the others, especially by those who exercise political power. In the 17th century, John Locke identified the natural right as the right to life, liberty, property. Such rights were described as the natural that were thought to be to be God given, and therefore to be part of the very core of human nature. By the 20th century, decline of religious belief had led to the secularization of natural rights theories, which were reborn in the form of human rights. Human rights are the right of which people entitled by virtue of by virtue of being human. They are therefore universal rights. This means that they belong to all human beings rather than to members of any particular nation, race, religion, or culture. Human rights are also fundamental rights as they are inalienable and they cannot be taken away or revoked. The modern human rights document are originated through the English Bill of Rights in 1689, the American Declaration of Independence 1776, the French Declaration of the Rights of Man and Citizen 1789, the first 10 amendments of the Constitutions of the United States, Bill of Rights 1791, and the Universal Declaration of Human Rights UN 1948। तो ये तो गया ह्यूमन राइट्स के बारे में। अभी डेफिनेशन क्या है ह्यूमन राइट्स का। तो डिफरेंट थिंकर्स जो होते हैं उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशंस दिए हुए हैं। तो चलिए डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। इन थियोरेटिकल रिव्यू मेनी theorists express their views about human rights. According to S. Kim, human rights reclaim and demand essential to the protection of human life and the enhancement of human dignity and should therefore enjoy full social and political sanctions. According to Subhash C. Kashyap, human rights are those fundamental rights to which every man inhabiting any part of the world should be deemed entitled by the virtue of having been born a human being. According to Milner, human rights are simply what every human being
owes to every other human beings. As such, represent universal moral obligation. According to Nickel, human rights norms, which are definite, high priority, universal, and existing and valid independently to recognition or implementation in the custom or legal system of particular country. According to the Protection of Human Rights Act 1993, describes human rights means rights relating to life, liberty, equality, dignity of the individuals guaranteed by the Constitution, embodied in the international conventions and enforceable by the Court of India. According to the United Nations Center of Human Rights, human rights are those rights which are inherent in our nature and without which cannot live as human beings. According to the Universal Declaration of Human Rights, human rights are as rights derived from the inherent dignity of human person. तो ये रहा आज का क्लास ह्यूमन राइट्स के बारे में. इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ चर्चा करूँगा डेमोक्रेसी के लेकर. धन्यवाद.